Hello everyone, hope you all are doing good. I'm Kanika, NEET faculty for biology classes. In the chapter Living World, so far we have discussed three characteristics of living organism, that is cellular structure, metabolism and growth. Out of these three we discussed that cellular structure and metabolism, they are considered to be defining feature of living organism, right? While growth is considered to be non-defining. Reason being, as it is also seen in non-living, and that type of growth is said to be extrinsic growth. So now we'll continue with another characteristic that is going to be reproduction. So let's get started. As we know, reproduction is a process by which progeny is formed by organism. Now reproduction can be sexual reproduction or asexual reproduction. In sexual mode of reproduction, two parents are required, male and female, where the fusion of male gamete and female gamete forms zygote. Since two parents are required in sexual mode of reproduction, we also call it as biparental reproduction. Sexual mode of reproduction is seen in multicellular organisms like higher plants and animals. While in case of asexual reproduction, no fusion of gametes takes place, right? Single parent ही daughter cells form करेंगे. That is why we consider it to be uniparental reproduction. Asexual mode of reproduction देखने को मिलता है unicellular organisms में like bacteria, hydra, right? Amoeba. Here in the example I have shown you amoeba का example. Amoeba का ये सेल है. इसके सेल की ग्रोथ के साथ में क्या होगा? सेल का साइज बढ़ेगा. Then nucleus start dividing. न्यूक्लियर डिवीजन के बाद होगा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया. And once the cytoplasm divides, two daughter cells are formed. तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट से ही daughter cells form हो गए. That's why we consider it to be uniparental reproduction. Now we'll discuss modes of asexual reproduction can be regeneration, as in case of planaria, commonly known as flatworms. Planaria can tear its body into pieces and each piece has the capability to regenerate new individual. Next example is budding, as in case of hydra. Hydra undergoes cell division at specific sites which results in the outgrowth that is called bud. These buds, they develop into tiny individuals and when they fully mature, they get detached from the parent body and they become new individual. Third example is fragmentation in case of filamentous algae, that is Spirogera. Spirogera breaks into fragments and again each fragment have the capability to become new individual. So asexual mode of reproduction can be regeneration, budding and fragmentation in case of planaria, hydra and Spirogera respectively. Now class, again this part is going to be very important from your exam point of view. Unicellular organisms may increase in cell size and increase in cell number. They are considered to be twin characteristics. यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जब सेल का ग्रोथ होगा तो सेल का साइज बढ़ेगा and when cell size increases it undergoes nuclear division followed by cytoplasmic division जिससे कि सेल का डिवीजन होगा and the number of cells will increase. इसीलिए कहा गया कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे आर सिनोनिम्स, यानी कि ये सेम है, ये सिमिलर इवेंट्स है. दे आर कंसिडर्ड टू बी म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, राइट. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में सेल ग्रोथ जब होगी उसी समय सेल का डिवीजन भी होगा, उसी समय रिप्रोडक्शन भी होगा. दैट इज व्हाई वी कंसिडर बोथ द इवेंट्स एज म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, राइट. जबकि आपके मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर कंसिडर्ड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. दोनों इवेंट्स अलग अलग है. क्लियर.
Now class, the question arises, reproduction is defining or non-defining feature? So the answer is reproduction is non-defining as it does not occur in all living organisms. यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्टेराइल हैं, यानी कि दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू फर्टिलाइज. फॉर एग्जाम्पल वर्कर बीज. एज यू नो, हनी बी की फैमिली में ड्रोन्स होते हैं, क्वीन होती है एंड वर्कर बीज होते हैं. जो सबसे ज़्यादा काम हाइव में करते हैं वो होते हैं वर्कर बीज. इनका ही काम है हनी बनाना, राइट? बट दे आर नॉट गोइंग टू अंडरगो फर्टिलाइजेशन. दे आर कंसिडर्ड टू बी स्टेराइल ऑर्गेनिज्म. अनदर एग्जाम्पल इज म्यूल. दे आर कंसिडर्ड टू बी फ्यूजन ऑफ हॉर्स एंड डंकी. अगेन ये भी स्टेराइल ऑर्गेनिज्म है, राइट? रिप्रोडक्शन को हमने नॉन डिफाइनिंग इसलिए कहा क्योंकि ये डिफाइनिंग फीचर का पहला क्राइटेरिया, दैट इज इट शुड बी प्रेजेंट यूनिवर्सली इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. बट यहाँ पे हमें कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से वी कंसिडर रिप्रोडक्शन एज नॉन डिफाइनिंग. ऑफ कोर्स नॉन लिविंग में नहीं होता है, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ये यूनिवर्सली प्रेजेंट नहीं है. So class, so far we have discussed 4 characteristics of living organism, that is cellular structure, metabolism, growth and reproduction. Out of 4 we discussed 2 as defining and 2 as non-defining. Growth को हमने non-defining कहा क्योंकि ये non-living में भी देखने मिलता है, while reproduction को non-defining कहा क्योंकि ये living में universally present नहीं है. Right? So in our next class, we'll be discussing the last characteristic, that is consciousness. So stay connected and stay tuned.